Hey teenies, welcome back to the channel or your beauty class. So teenies, this video is your sign to stop overcomplicating skincare. Because skincare का मतलब कोई 10 step routine या फिर expensive and overly hyped skincare products नहीं होता है. And definitely you don't need to spend a single penny to make your skin glow. Instead आपको चाहिए है एक simple and natural skincare routine that you can follow effortlessly and easily. और जो एक्चुअली वर्क करे एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट. सो टीनीज, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू गेट ग्लास स्किन एफर्टलेसली एट होम. नो प्रोडक्ट्स, नो गिमिक्स, ओनली रियल रिजल्ट्स. वो भी बाय ओनली यूजिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव एट योर होम. अगर आप डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो लाइक ड्राइनेस, टेक्सचर और एक्ने, then this is the glow up your skin have been waiting for. So teenies, before we start, go and grab your favorite drink and your prettiest notebook. So let's go get it. So teenies, in this video मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक वीकली स्किन केयर रूटीन जो कि आपको देगा ग्लास स्किन and that you have to follow religiously. So teenies, step 1 is double cleansing. ये आपका फर्स्ट स्टेप है to get smooth, glowy and glass skin because you need to get rid of dirt, sweat and जो भी आपके स्किन के पोर्स में है जो कि रिजल्ट कर रहा है टाइनी बम्प्स, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स में. सो बेसिकली डबल क्लेंजिंग इज अ 2-step मेथड वेयर स्टेप 1 आपकी स्किन से सारे डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करेगा and step 2 will go deep into your skin and will wash your skin deeply. So teenies, step 1 is oil cleansing. Oil cleansing breaks down sunscreen, oil and all the gunk जो कि आपके स्किन के पोर्स को क्लॉग कर रहे हैं and also stealing your glow. So teenies, here's what you will need. Few drops of olive oil or a tiny amount of Vaseline और coconut oil. आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं. Start with dry skin by taking small amount of oil and massage it in circular motion all over your face. At least 5 minutes. ज्यादा फोकस अपने नोज के साइड्स, फोरहेड पर करें एंड आफ्टर अ वाइल थोड़ा सा वाटर ऐड करके इस प्रोसेस को फिर से कंटिन्यू करें फॉर अनदर 5 मिनट्स. एंड देन जब आपको अपना फेस रिलैक्स्ड एंड बहुत ही ज्यादा ऑयली लगे, देन क्लीन योर फेस विद अ वेट क्लॉथ. This will unclog your pores, soften blackheads and whiteheads and will prep your skin for the second cleanse. So teenies, step 2 is gentle cleanser, जहाँ आप actually अपनी skin को clean करोगे. So teenies, we will be using some oats and water to clean our face. So teenies, हमें चाहिए है थोड़ा सा oats जिसमें हमें थोड़ा पानी ऐड करना है and then squeeze the water out of it. अब उस वाटर को सर्कुलर मोशन में अपने फेस पर मसाज करना है एंड रिपीट दिस प्रोसेस 3 times. एंड उसके बाद जो ओट्स बच जाए उसे एज अ स्क्रब अपने फेस पर यूज कर लो. मसाज इट फॉर 30 seconds ऑन योर फेस एंड देन अपने फेस को कूल वाटर से वॉश कर लो. टीनीज, हियर्स अ प्रो टिप. अगर आप लोग हर रोज बाहर जाते हो या फिर हर रोज सनस्क्रीन लगाते हो, देन फॉलो दिस स्टेप एवरी डे. And in the morning you can use only the oatmeal cleanser, no oil. Now comes step 2, ice facials. I mean, who doesn't love ice facials? So teenies, if you want your pores to look invisible and to make your skin look glowy, then use ice facials every day. Ice facial can tighten, brighten and make your skin glow in just 3 minutes. आपको आइस फेशियल्स जस्ट आफ्टर क्लेंजिंग या फिर बिफोर मॉइस्चराइजिंग करना है. रब इट जेंटली ऑल ओवर योर फेस. स्टार्ट विद योर cheeks and then your temple and then your forehead. And don't forget to rub it under your eyes and also around your nose. So teenies, do this for at least 2 to 3 minutes. And you can even level it up by boiling green tea and pouring it into a ice cube tray and freezing it. क्योंकि ग्रीन टी एंटी इंफ्लामेटरी होती है प्लस इट्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इज calming for the acne prone skin as well. Or you can freeze a cucumber in your freezer and gently rub it all over your face for at least 3 minutes because it soothes irritation and hydrates your face like crazy. Step 3, tone your face. My teenies, क्योंकि अब आपकी स्किन क्लीन एंड टाइटन हो चुकी है, now we are going to give it the balance and hydration it needs. Toner shrinks pores, tightens skin, balances skin's pH and adds hydration before moisturizer.
So basically toner is like your skin's first sip of water after a long time. So you can say कि आपकी स्किन थर्स्टी है एंड उसे पानी पीना है. So here comes green tea toner. Green tea is amazing for your skin as well as your body. It hydrates, heals and reduces dark circles. So अगर आप लोगों को डार्क सर्कल्स है देन बॉइल सम ग्रीन टी इन वाटर एंड देन डिप कॉटन पैड्स इन इट और उन कॉटन पैड्स को रात को सोने से 5 मिनट्स पहले अपने आईज पर रख लो. सो टीनीज, नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू मेक योर ग्रीन टी टोनर. ऑल यू नीड टू डू इज टेक सम ग्रीन टी एंड उसमें हॉट वाटर ऐड कर लो एंड वेट जब तक वो कूल ना हो जाए. एंड जब वो कूल हो जाए किसी स्ट्रेनर की हेल्प से उसे स्ट्रेन कर लो. एंड आफ्टर क्लेंजिंग एंड आइसिंग स्प्रे इट ऑल ओवर योर फेस. आप कॉटन पैड्स का भी यूज कर सकते हैं. यू कैन सिंपली रब इट ऑन योर फेस एंड वेट एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स बिफोर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर. यूज इट मॉर्निंग एंड नाइट फॉर कंसिस्टेंट ग्लासी ग्लो. एंड ऑल्सो कीप इन माइंड टू स्टोर इट इन रेफ्रिजरेटर एंड यू कैन यूज इट ओनली फॉर 7 days. उसके बाद एक नया बैच बना लो. Our next option is rice water toner. So rice water एक iconic K beauty secret है. As it brightens dull skin, fades dark spots and smooth skin texture. So teenies, now you can say bye bye to your bumpy skin. Put a cup of rice in a bowl and wash very thoroughly 3 times. And store the 4th water from the rice in a bottle and apply it on your face और बचे हुए को रेफ्रिजरेटर में रख दो. You can use it 5 to 7 days and then make a new one again. Now comes step 4. Moisturize your skin. So teenies, always remember कि moisturization एक ऐसा step है जिसे आप कभी भी skip नहीं कर सकते. If you want that glass glowing skin. Because it isn't just about hydration, but it's about sealing everything that you have just done. You know, the cleansing, the icing, the toner, all the effort that we have just put in. So teenies, यहाँ पर मैं आपके साथ 2 different types के moisturizers share करूंगी, so that every teenies watching can find one that fits her skin type. First is aloe vera gel. This is perfect for oily, combo, acne prone and sensitive skin. It's so lightweight and non-greasy that it feels like water but better. Because it adds hydration, stops breakout and reduces redness. अगर आपके पास aloe vera plant है then grab a thick leaf. Cut it and peel out the clear gel inside and slice it and soak it in water for 30 minutes. Blend this gel and simply strain for a smooth texture. आप इसे किसी जार में फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं and you can store it for 7 days. And if you don't have a plant then I would suggest you to get a gel instead. After toning, take a small amount of aloe vera gel and rub it on your face in circular motion. So second option is olive oil. Olive oil is perfect for dry skin girlies because it seals every bit of moisture जो कि आपकी skin में है and gives your skin that glossy dewy look. Only use a drop or 2 because too much can make your skin greasy and oily. Put a little bit of it on your face and rub it gently. You have to rub it at least for 20 seconds. Teenies, olive oil filled होता है ढेर सारे antioxidants and fatty acids that your skin loves. Step 5. Exfoliate. Dear teenies, if you are not exfoliating 3 times in a week, then you are literally moisturizing dead skin cells. Yes, you heard me right. क्योंकि exfoliating is something that takes your skin from dull and tired to clear, bright and baby smooth skin. It will make your toner and moisturizer actually work, leaving your skin smoother, brighter and even toned. So teenies, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने 2 favorite scrubs that I love using. And don't panic, we are not using harsh ingredients like sugar. So teenies, number 1 is tomato face scrub. Tomato is an antioxidant. It fights dullness and gently dissolves dead skin and hydrates as well as exfoliates. Simply cut a ripe tomato in half and gently rub the fleshy side on clean, damp skin for 1 to 2 minutes in circles. Then let the juice sit for 5 minutes before rinsing off with cool water. ये literally बहुत ही ज़्यादा simple है. You can use it 2 times in a week for faster results. Our second option is banana peel face scrub. Teenies, स्टॉप ट्रैशिंग योर बनाना पील्स. आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये बनाना पील कितना बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए.
Banana peels are filled with antioxidants जो कि हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, ब्राइटर करते हैं and even fights acne. After eating banana, gently massage the inside part of the peel on your face in small circles all over your clean damp face for 1 to 2 minutes. Focus on rough areas like nose, chin and forehead. And wait 5 minutes before rinsing off with cool water. Use this twice a week. You only need to exfoliate before night. And always exfoliate before icing, toning and moisturizing. So teenies, let's head toward our 6th step. That is face mask. So my beautiful teenies, ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी स्किन को भी चिल टाइम चाहिए होता है. At least twice a week. So let's pamper her with a face mask. Number 1, green tea and honey face mask. ये मास्क फाइट करता है पफीनेस से, स्किन को हाइड्रेट करता है and also gives you that fresh glow. And the good thing is that it only takes 1 minute to make. Put honey in a plate, add little bit of green tea in it and mix well. And apply it on your clean face with fingers or brush. Wait at least 15 minutes before rinsing with cool water. Next is rice and honey face mask. ये मास्क ना सिर्फ आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा but will also tighten your skin, giving it clear poreless glow. Take rice in a bowl, wash it thoroughly 3 times to remove dirt. Then boil जब तक वो soft ना हो जाए. And then blend करने से पहले थोड़ी सी honey ऐड कर दो and then blend it into a smooth texture. And apply on your face and leave for 15 minutes before rinsing and after masking. Rinse, pat dry and go straight into moisturizer. My dear teenies, मुझे पता है that you are super confused. Like how am I supposed to use all of this? Well, don't worry. मैं इन सभी steps को आपके लिए break down करती हूँ. So one day you can keep masks and exfoliating aside. That means on that day you need to only cleanse with oats, eyes, tone and moisturize. And at night double cleanse, eyes, tone and moisturize. And now the day जब आपको अपनी स्किन को exfoliate भी करना है and mask भी लगाना है. Then follow these steps. In the morning cleanse with oats, eyes, tone and moisturize as usual. But at night double cleanse, exfoliate, then eyes, tone, mask and then moisturize. So teenies, now comes step 7. Good habits for glass skin. Finally teenies, the real glow and glass skin lives in your habits. And if you don't level up your habits, then don't expect a glow up. So ये कुछ good habits है that will help you get glowing glass skin. Number 1, sleeping 8 hours. It repairs your skin, glows it and tightens it. Number 2, drinking water plumps, clears and evens your skin. Number 3, eating veggies and fruits helps clear acne and brightens your face. Number 4, avoiding greasy food results in less clogged pores and less breakouts. Number 5, staying active, even walking boosts blood flow and glow. Number 6, not touching your face means less bacteria, which equals to less breakouts. And that's everything teenies. You don't need minimalist, plump or any kind of expensive skincare product. So teenies, let's go get that glass skin and shine like the star you are. And don't forget to like, comment and subscribe. And to tell me when your skin starts glowing. I'll be waiting, my loves. Bye bye. Stay tuned and stay blessed.